Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from Testbook.com. Hello friends, a very good evening to all of you. So guys, I hope preparation बढ़िया चल रही है. तो 2020 is about to close. It's 28th दिसंबर है ना. सिर्फ 2-3 दिन बाकी रह गए हैं, 29th, 30th एंड 31st. और अगर सिविल के पेपर की बात करें, सो इन फर्स्ट वीक ऑफ फेब यू हैव द एग्जाम फॉर सिविल. सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक हाउ मेनी डेज आर देयर विद यू? ओनली 35 डेज, 37 डेज. और मैकेनिकल वालों के पास चलो एक हफ्ता एक्स्ट्रा है, सो दे हैव लाइक 42 डेज. तो अब हाई टाइम है कि आप लोग बहुत सारा रिवीजन कीजिए. और डेफिनेटली आप लोग जहां भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, आई नो, मतलब अगर सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तो आप मतलब जो भी आपने नोट्स बनाया उनको खूब सारा बार बार रिवाइज कीजिए. और अगर आप कहीं पर किसी एकेडमी में पढ़ रहे हैं तो अपने टीचर्स के जो भी रिवीजन सेशंस हैं उनको अटेंड कीजिए, है ना. वो जो गाइडेंस देते हैं उसको फॉलो कीजिए, मतलब जिस भी सिनेरियो में है. बट रिवाइज करना है, बहुत सारा रिवाइज करना है. विदाउट रिवीजन कुछ भी नहीं होने वाला. अच्छा, अभी 22 दिसंबर को एक हीट ट्रांसफर का सेशन हुआ था. सो मेरे को लगता है कि वो सेशन काफी सक्सेसफुल रहा. विद इन 10 आवर्स हम लोगों ने एक एक फॉर्मूला रिवाइज किया, जिसमें कंडक्शन, थर्मल रेडिएशन, कन्वेक्शन, इन पे हमने काफी अच्छे से डिस्कशन किया. हीट एक्सचेंजर, कन्वेक्शन में हम लोग थोड़ा सा आगे पीछे हो गए, बट मुझे लगता है बाकी चैप्टर्स बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज किए. अच्छा, नेचुरल कन्वेक्शन पे मैंने एक वीडियो सेशन भी बनाया है 2 आवर्स का, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं फॉर गेट एग्जाम. फिर 26th of December we had a session of fluid mechanics. So fluid mechanics का जो experience है वो it was quite different as compared to heat transfer. So in heat transfer we were able to complete all 5 chapters within 9 hours. हमने पूरा रिवाइज किया, शॉर्ट नोट्स बनाया, सारा हम कंप्लीट कर पाए. बट मुझे लगता है कि शायद फ्लूइड मैकेनिक्स में थोड़ा सा मेरा भी नॉलेज अच्छा खासा है, और उसमें 30 ईयर जो पेपर है उनमें वेरिएशन भी काफी रहता है. तो हमने थोड़ा डीप डिस्कशन कर रहे थे, तो शॉर्ट नोट्स बनाने में टाइम भी लग रहा था. सो अभी मैं आपको प्लान बता देता हूं. देखो, सबसे पहला प्लान तो ये है कि जो फर्स्ट वीक ऑफ फेब है तब आपको सिविल का पेपर आएगा, और 14th फेब को मैकेनिकल का पेपर आएगा. एंड डेफिनेटली यू गाइज हैव लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स टू गो थ्रू, राइट. आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं रिवाइज करने के लिए. तो अब मेरा एजेंडा ये है कि अगर मैं उस दिन की तरह हर चैप्टर पे 4-4, 5-5 घंटे लगा रहा हूं फॉर शॉर्ट नोट्स, तो आप लोगों का बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा. सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत टाइम निकल जाएगा. तो मैंने प्लान ये बनाया है कि मैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स का एक शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी बना के रखूंगा, और किसी एक दिन सुबह 1.5 घंटे का वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आप, और वही नोट्स आपके साथ शेयर भी कर दूंगा ताकि आप उसी को ही फॉलो कर लें, उसका प्रिंट आउट ले लें अगर जरूरत पड़े तो. वैसे तो सेल्फ रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ रिटन रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप पता है क्या कर सकते हैं, वो वीडियो देख के उन्हीं शॉर्ट नोट्स को एक बार रफ में लिख के देख सकते हैं. तो ऐसे भी आपका काम बन जाएगा. पर उससे फायदा क्या होगा कि अगर हर चैप्टर पे 3-4 घंटे लग रहा है शॉर्ट नोट्स बनाने में, तो आपको टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा. इस तरह से हम एक छोटे छोटे सेशंस लाएंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि इस हफ्ते भी आपके 2-3 चैप्टर्स के 1 आवर 15 मिनट्स ईच, इससे ज्यादा सेशंस ना हो. तो सुबह सुबह वो सेशंस डाले जाएंगे. जब भी डाले जाते हैं तो मैं आपको वो प्लान बता दूंगा. इस तरह से तो वो चैप्टर्स शेयर होंगे. Particularly for dimensional analysis and pumps, I will ask my team to give me time for that and allow me to have full sessions with you guys. क्योंकि इस चैनल पे वही 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमने डिस्कशन नहीं किया है. नहीं तो हमने टर्बाइंस पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है, विस्कोसिटी पे, फ्लूइड डायनेमिक्स पे, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस वगैरह सभी चीजों पर डिस्कशन किया है ना. तो वो 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैं कोशिश करूंगा कि मुझे टाइम मिल जाए टीम की तरफ से भी, कि मैं आपके साथ 4 घंटे का एक सेशन लगा रहा हूँ, 4-5 घंटे का जो डायमेंशनल एनालिसिस पे है, 4-5 घंटे का सेशन लगा रहा हूँ आपके साथ जो पंप्स पे है. और ये सेशन क्या है, सो अभी फ्यू डेज बैक
वी कंप्लीटेड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ हीट ट्रांसफर, है ना। सो अब ये नया सेशन क्या है रात का। सो क्या होगा, हम लोग कंटिन्यूअसली डेली बेसिस पर एक टॉपिक करेंगे कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन। सो आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स की, जैसे मैंने बोला है कि फ्लूइड मैकेनिक्स की रिवीजन मुझ पे छोड़ दो, वो रिवीजन मैं आपको करा के दूंगा और आप अपनी बाकी जो टॉपिक्स हैं उनकी रिवीजन करो अच्छे से। वो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। मतलब डेफिनेटली आप अपने सभी टीचर्स के साथ रिवाइज कर रहे होंगे या खुद से भी रिवाइज कर रहे होंगे, मगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स को मुझ पे छोड़ सकते हैं। सो मेरा प्लान क्या है, आप देख रहे हो ना, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस लिखा है। आप कहोगे सर ने हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस क्यों लिखा है? ऐसा इसलिए क्योंकि उस दिन 26 तारीख को जो सेशन हुआ था वहां मैंने प्रेशर मेजरमेंट तक सब कंप्लीट करा दिया था। सो क्या होगा, वो चैप्टर वाइज 1 आवर का रिवीजन सेशन विद नोट्स तो डालेंगे ही डालेंगे, मगर अब डेली बेसिस पे मैंने 3-4 टीचर्स से डिस्कस किया, मेरे सीनियर टीचर्स से डिस्कस किया। वो ये कहते हैं कि वो वाली रिवीजन तो ठीक है, मगर अगर आप कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन कराते हो ना तो स्टूडेंट के दिमाग में ज्यादा बढ़िया बैठेगा। सो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ऐसा क्वेश्चन हो, एक सिंगल क्वेश्चन हो जो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहा हो, और रोज का अगर हम 45-50 मिनट्स या मे बी कभी 1.5 आवर निकाल रहे हैं और एक पूरा टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं विद क्वेश्चन, तो वो दिमाग में ज्यादा बैठेगा। सो अब एम यही है, डेली बेसिस पे टॉपिक चलेगा कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन, जैसे सब जगह होता भी है। सो आज है हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन प्लेनर सरफेसेस, तो एक क्वेश्चन करेंगे और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कल हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन कर्व्ड सरफेसेस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे विद इन अ सिंगल क्वेश्चन। फिर परसों ब्यूएंसी एंड स्टेबिलिटी, और इस तरह से कंटिन्यूअसली चलते जाएंगे। तो आज मैं प्लान करके देख रहा था। सो मैंने क्या किया है, सिविल के एग्जाम से पहले तक पंप्स तक कंप्लीट करेंगे, और सिविल के बाद हमारे पास एक टॉपिक बच जाएगा जो कि कंप्रेसिबल फ्लो का होगा। तो सिविल के एग्जाम के बाद जो कंप्रेसिबल फ्लो का टॉपिक्स होंगे उनका डेली बेसिस पे कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन करेंगे। तो मैंने वैसे एक शेड्यूल बनाया और मार्केटिंग टीम के साथ शेयर किया है, वो मैं आपको कल पीपीटी में डाल के दिखा दूंगा। आप कॉपी पेस्ट कर कॉपी ले रख सकते हो अपने पास, फोटो खींच के रख सकते हो, ठीक है। सो आई थिंक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। सो लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन। सो ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू अ लॉट ऑफ बुक्स। बहुत सारी बुक्स में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, मनसून एंड यंग में, सेंजल एंड सिम्बाला में, शायद एसके सोम साहब की किताब में भी है, और वही क्वेश्चन मैं आपको क्लास में भी देता होता हूं। तो वही उसी तरह का एक क्वेश्चन है। अब इसको थोड़ा सा हल्का सा मॉडिफाई करता हूं। सो क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपके पास एक चैम्बर है और इस चैम्बर की एक साइड पर इस तरह से गेट लगा हुआ है। सो एक रेक्टेंगुलर चैम्बर है, ओके, एंड विद इन द रेक्टेंगुलर चैम्बर देयर इज अ गेट, एंड एक्चुअली दिस इज अ बिग कंटेनर, बहुत बड़ा कंटेनर है जिसके 2 कंपार्टमेंट्स हैं। तो एक कंपार्टमेंट तो फुली क्लोज्ड है और दूसरा कंपार्टमेंट फुली ओपन है। आई होप आप लोग रियलाइज कर पा रहे होंगे किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं। अब ये जो गेट है, इस गेट की हमें टोटल हाइट दी हुई है मे बी 4 मीटर्स। कितनी हाइट दी हुई है? 4 मीटर्स। जस्ट रैंडम वैल्यू ले रहा हूं, ठीक है, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसी कोई रियल में सिचुएशन नहीं होती। 4 मीटर्स ले रहा हूं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूं। ये गेट है, ये 4 मीटर्स का है, और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे पानी है। पानी की जो टोटल हाइट है वो मे बी 6 मीटर्स है। पानी की टोटल हाइट में भी 6 मीटर्स है, एंड अबव वाटर देयर इज प्रेशराइज्ड एयर, जिसका प्रेशर हम एक प्रेशर ट्रांसड्यूसर से नाप रहे हैं। बॉर्डर ट्यूब गेज से नहीं नाप रहे, प्रेशर ट्रांसड्यूसर से नाप रहे हैं, ठीक है। सो उसका एक रीजन है जो मैं यहां डिस्कस नहीं करना चाहता हूं, ठीक है। तो यहां पे एक प्रेशर ट्रांसड्यूसर है। दरअसल मैंने इस प्रेशर ट्रांसड्यूसर को कैलिब्रेट किया है ताकि ये हवा का एब्सोल्यूट प्रेशर बताए। क्या बताएगा ये आपको?
एब्सोल्यूट प्रेशर बताएगा। सो जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, डेफिनेटली एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दे कैन आस्क मी डाउट, जो भी डाउट लगे, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी डिस्कशन करना हो। सो मैं देख रहा था कि कुछ दिनों से काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं प्रोजेक्ट्स रिलेटेड बात कर रहे हैं मेरे साथ। हाँ, कोई गैस टरबाइन से रिलेटेड, कोई डैम से रिलेटेड, कोई रोबोटिक्स से रिलेटेड। तो बाकी स्टूडेंट्स के पास भी अगर कोई आइडियाज हो, वो डिस्कस करना चाहते हो, हल्का फुल्का इंफॉर्मेशन चेक करना चाहते हो, तो वो लोग मुझे बता सकते हैं। अगर मेरे से कोई हेल्प बनेगी, कुछ बन पाएगा, तो मैं जरूर गाइड करूंगा। अब वो कह रहे हैं कि प्रेशर ट्रांसड्यूसर में जो रीडिंग आ रही है, दिस रीडिंग इज मे बी 140 किलो पास्कल। ये बोल रहा है वो, प्रेशर ट्रांसड्यूसर में जो रीडिंग आ रही है वो 140 किलो पास्कल है। और राइट हैंड साइड का जो बीकर है, सो बेसिकली गेट की राइट हैंड साइड पर, सो गेट की राइट हैंड साइड पर जो कंटेनर है, दैट इज पार्शियली फिल्ड विद ऑयल। और इस ऑयल की जो हाइट है, दैट इज 3 मीटर्स। ये भी हमें दिया हुआ है। ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है आपको 0.8, और वो बोलता है कि दिस राइट हैंड साइड कंटेनर इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। और वो बोलता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर हम एब्सोल्यूट एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालें, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 100 किलो पास्कल। ठीक है, ये उसने सिचुएशन दी हुई है। अब वो ये पूछ रहा है, इस सिचुएशन में अगर गेट ओपन करने की कोशिश करेगा तो मिनिमम स्टॉपिंग फोर्स कितना पॉसिबल है और उसको कहां लगाना चाहिए। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, मतलब मैं इस क्वेश्चन को पार्ट्स में स्प्लिट कर देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि भैया फाइंड आउट द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, फाइंड आउट द रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स बिकॉज ऑफ ऑयल एंड कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर ऑफ प्रेशर। ओके, सिमिलरली फाइंड आउट द resultant pressure force because of water on the gate and resultant center of pressure on the gate surface। फिर तीसरा वो क्वेश्चन कहता है कि अगर गेट ओपन होने की कोशिश करता है तो मिनिमम स्टॉपिंग फोर्स कितना होगा और उसका लोकेशन कितना होगा, मिनिमम स्टॉपिंग फोर्स कितना होगा और उसका लोकेशन क्या होगा। और तीसरा और चौथा वो ये पूछ रहा है कि भैया अगर आपने इतना फोर्स लगा दिया तो रिएक्शन इन हिंज जॉइंट्स क्या होगा। ठीक है, सो ये हम क्वेश्चन मेरे ख्याल से इस तरह के हम क्वेश्चंस करते भी हैं, बस इसमें थोड़ी सी मैंने मॉडिफिकेशंस कर दी हैं जो हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स बताएंगे और हमारे गलती करने के चांसेस कम होंगे और कैलकुलेशन फास्ट करने के भी कुछ मेथड्स होंगे। ये हमारा एम है। ठीक है, सो दिस इज अवर एम टू कैलकुलेट द प्रेशर फोर्स बिकॉज ऑफ ऑयल ऑन द गेट सरफेस, टू कैलकुलेट द कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर ऑफ प्रेशर, टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स बिकॉज ऑफ वाटर एंड कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर ऑफ प्रेशर, मिनिमम स्टॉपिंग फोर्स एंड रिएक्शन इन द हिंज जॉइंट। तो चलो फिर चालू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट अस स्टार्ट, लेट अस बी क्विक। सो गाइस देखते हैं, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं कि सिस्टम में हो क्या रहा है। सो हमें पता है when any surface is exposed to water or any fluid, that fluid is going to exert a pressure force on the surface. So अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, मैं अभी ऐसे ड्रॉ नहीं करता हूं, थोड़ा सा भी याद हो कि मान लीजिए आपके पास एक फ्लूइड का टॉप सरफेस है, there is a fluid at rest and this is the top surface of the fluid. Now within the fluid there is an object and just for easy diagram I am drawing it as a cubical body, cuboidal body, मगर वो कैसा भी बॉडी हो सकता है। ठीक है, अब इसके एक सरफेस की बात करते हैं जैसे ABCD, और ABCD एक प्लेनर वर्टिकल सरफेस है। कैसा सरफेस है? वर्टिकल प्लेनर सरफेस है, वर्टिकल प्लेनर सरफेस है। ठीक है, मगर इसकी शेप कैसी भी हो सकती है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, कोई भी रैंडम शेप हो सकती है। ठीक है, अब अगर आपको चेक करना हो पानी के कारण इस पे प्रेशर फोर्स चेक करनी हो तो मेरे ख्याल से आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं लेट अस कंसिडर ओनली द सरफेस ऑफ द बॉडी। हम पूरी बॉडी को ड्रॉ करने के बजाय सिर्फ बॉडी का सरफेस ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, और ये जो सरफेस है इसके प्लेन को एक्सटेंड करके देखते हैं। सो द प्लेन ऑफ द सरफेस एंड द प्लेन ऑफ फ्री सरफेस ऑफ वाटर, सो बेसिकली द प्लेन ऑफ सरफेस एंड दिस प्लेन, ये
जो फ्री सरफेस ऑफ वाटर का प्लेन है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन. दैट इंटरसेक्शन इज कॉल्ड एज 1 एक्सिस. इसको हम रेफरेंस एक्सिस 1 एक्सिस कहते हैं. अब आप क्या बोलेंगे, इस सरफेस का एक सेंट्रॉइड होगा और उस सेंट्रॉइड की 1 एक्सिस से कोई डेप्थ आएगी, है ना. सो इस डेप्थ को आप बोलते हैं सेंट्रॉइडल डेप्थ. क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रॉइडल डेप्थ बोलते हैं. अब अगर आप सरफेस को यहां से देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, आपको पता लगेगा कि इस सरफेस पे एक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन आएगा. तो टॉप एज पे प्रेशर कम होगा क्योंकि टॉप एज की डेप्थ कम है, बॉटम एज पे प्रेशर ज्यादा होगा और हमें प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा इस तरीके से. अब ये वाला जो 3D प्रेशर प्रिज्म बनता है, 3D फिगर बनता है, इस 3D फिगर को आप क्या बोलते हैं? इस 3D फिगर को आप बोलते हैं प्रेशर प्रिज्म, है ना. ये वाला जो 3D फिगर बन जाता है इस तरह से, जो पूरे सरफेस पे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है, इसको बोलते हैं प्रेशर प्रिज्म. अब आप क्या बोलते हैं, इस प्रेशर प्रिज्म के कारण एक रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स आएगी जो सेंटर ऑफ प्रेशर पे लगेगी, सरफेस के सेंटर ऑफ प्रेशर पे लगेगी. तो ये प्रेशर फोर्स कितनी आती है? ये प्रेशर फोर्स आती है रो जी AHC, है ना. बट इसमें एक चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है, ये जो प्रेशर फोर्स है रो जी AHC, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब हम ये फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जीरो मान रहे थे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मान रहे थे. यानी कि आपने जो भी कैलकुलेशंस की हैं, ऑल दोस कैलकुलेशंस आर बेस्ड ऑन गेज प्रेशर. They are based on what? Gauge pressure. ये चीज आपको ध्यान रखनी है. जब आप रो जी AHC कैलकुलेट कर रहे हैं तो टॉप सरफेस ऑफ फ्लूइड पे प्रेशर कितना होना चाहिए? गेज प्रेशर 0 होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, अदरवाइज ये आपकी कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगी. ठीक है. और ये जो सेंटर ऑफ प्रेशर है, इस सेंटर ऑफ प्रेशर की टॉप एज से डेप्थ कितनी होती है? इसको हम लिखते हैं HP लिखते हैं, है ना. सो HP का मतलब क्या होता है? HP का मतलब होता है डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम टॉप सरफेस ऑफ फ्लूइड, और ये बन जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 1 एक्सिस अपॉन AHC. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HC प्लस IG अपॉन AHC. मेरे ख्याल से इस तरह से कुछ फॉर्मूला लिखते हैं. इसमें 1 एक्सिस का मतलब है, 1 एक्सिस का मतलब है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अवर सरफेस अबाउट 1 एक्सिस, राइट. और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के हमें ये मिल जाता है. IG का मतलब क्या है? IG का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सरफेस अबाउट अ सेंट्रोइडल एक्सिस पैरेलल टू 1 एक्सिस. ठीक है ना. सो आई थिंक दिस इज व्हाट द फॉर्मूला इज. हाय मुथु, हाउ आर यू? व्हाट्स हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर? So pressure is simply force per unit area, and when you are saying hydrostatic, hydro means water and static means water at rest. ठीक है ना. But what we do, we multiply pressure by area. So pressure by area is force. So that you call as hydrostatic force. So sometimes it is written as total pressure force. So that is hydrostatic force only. Pressure into area, force. Okay. Now HP is equal to HC plus IG upon AHC. I hope everyone remembers this formula. Now let us apply these formulas in our figure. So first of all, what we have a container. We have a container and there is a gate over here. There is a gate over here. So obviously the gate has two surfaces. The gate has two surfaces. One surface is exposed to water and other surface is exposed to oil. So on every surface there will be a pressure force, resultant pressure force. Now water will also apply a pressure force and oil will also apply a pressure force. So let us talk about the pressure force because of oil first. Let me talk about the pressure force because of oil. So what is the height of oil column? Height of oil column is 3 meters. What is the height of the gate or the hinge joint? Height of the gate or the hinge joint from bottom is 4 meters, right? So let me talk about the forces of oil first. So obviously if I consider the surface of gate exposed to oil, the total height of the gate is 4 meters, but only 3 meters of the gate is exposed to the oil, right?
So what you guys will say? You guys will say, sir, when we talk of oil, the density of oil is 800 kg per meter cube. Why? Because its specific gravity is given as 0.8. Now we know that oil is going to exert some pressure force. So the oil will exert a force, pressure force because of oil, and the point where this force acts, it will be called as center of pressure of oil, right? Center of pressure of the surface for the oil. Now guys, FPO, this is simply equal to density of the fluid. So density of oil into area of the surface into G into centroidal depth of the surface. I think this is what is the formula, right? This is the formula for pressure force. So my question is, while calculating the pressure force, what should be the area of the surface? What should be the centroidal depth of the surface? Because when I talk of total area of the surface, what is the height of the gate surface? 4 meter. What is the total height of gate surface? 4 meter. And maybe perpendicular to plane of paper, the width is 1 meter. Actually in the question, width of the gate was not given. Width of the figure perpendicular to plane of paper was not given. So let me take it as 1 meters. What is the width perpendicular to plane of paper? 1 meter. So if I consider the total surface of the gate, the total surface of the gate is 1 meter by 4 meter. Total surface of the gate is 1 meter by 4 meter, like this. But when you talk of oil, so oil is up to this much height. Oil is up to this much height. So this is 3 meters. Now the question is, what will be the area of the gate? Should it be 4 meters square? Should I write area is equal to 4 meters square? So this is one point of mistake. This is one of the points where students make a mistake when they are in haste. This will be wrong. Even though the total surface area of the gate is 4 meters square, but you will not put here 4 meters square. You know why? Because the portion of the gate which is outside oil, so this portion is exposed to atmosphere. So how much force the atmosphere will create? It will create 0 force, right? So because of atmosphere, there is no force. So only pressure force that acts is on the surface which is inside oil, right? So you will consider only this area of the gate which is exposed to the oil. So whenever you write A always means the area of submerged portion, area of submerged surface, the portion of the gate which is inside the fluid, submerged surface. ठीक है ना? Now when you will talk of the submerged surface, I think submerged portion is only this much, है ना? Submerged portion is only this much, that is 3 into 1 meter, 3 into 1. So what will be the area value? Area value is going to be 3 meter into 1 meter, that is 3 meter square. Similarly, many times students make a mistake. So they will say, this is a rectangular gate. The centroid of the rectangle lies in the middle point. Now the total height of the gate is 4 meter. So centroid will lie here. That is at 2 meter distance from the top. But again they make a mistake. When we put centroidal depth in the formula, that is the centroid of the submerged surface. Not the total surface, but the centroid of the submerged surface. Now what is the total height of submerged surface? 3 meters. So what is the depth of the centroid of the submerged surface? 1.5 meter. So please remember this. This is one possibility of mistake. जब हम जल्दी में होते हैं तो इस तरह की mistake हम कर देते हैं. So what is the centroidal depth? Centroidal depth of submerged surface. Depth of centroid of submerged surface from top surface of fluid. Depth of centroid of surface, submerged जो पोर्शन डूबा हुआ है फ्लूइड के अंदर, submerged surface from top surface of fluid. Now guys, very good Muthu, very good. Now guys, I thought you would ask me a question.
मुझे लगा था आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछोगे. You know what? I thought you would ask me, sir, why you are saying that on this portion there is no pressure force? Why are you saying like this? Because atmospheric pressure is given to us as 100 kilopascal. No one has asked this question. मतलब I think only 2-3 students are watching the video, but still then, ठीक है? So I thought you would ask me a question that, sir, atmospheric air has a pressure of 100 kilopascal. So you are saying the portion of the gate which is outside oil, there is no pressure force on it, but it is exposed to the atmosphere which is 100 kilopascal. So how come you are taking force as 0? Do you remember this? What is the reason behind it? किसी को ध्यान है इसका reason? The reason is very simple. I hope you remember many times I do a question of gate 2004 in which there is a vertical tube. So in the vertical tube there is a piston and I ask you to calculate how much force is required to hold the piston when there is water above the piston. So what we do? We solve the problems by two methods. In one method, all the pressure terms are written as absolute terms, and in the other method, all the terms are written as gauge terms. So we find out that whether we take absolute pressure or we take gauge pressure, the final forces are the same. Why? Because atmospheric pressure will act from all the sides and it will cancel out. So if you have an atmospheric term over here, then over here also you will have an atmospheric term and these terms will cancel out. So in fluid mechanics, when we talk of forces, actually we are interested in motion and deformation. So whether you calculate the resultant force from absolute pressure or you calculate the resultant force from gauge pressure, you will get the same answer. So we always treat the atmospheric pressure as 0, and instead of writing gauge pressure, instead of writing absolute pressure, we write gauge pressure. So atmospheric pressure was treated 0 by me and I was talking of gauge pressure. So if I am taking gauge pressure on right hand side, then I will take gauge pressure on left hand side also. ठीक है ना? ये चीज ध्यान रखनी है. Muthu, I hope beta you know this and this is clear to you. If this is not clear to you, please do let me know. I will show you an example and from that example we will understand. ठीक है? Now let's move ahead. So first of all, let us find out the resultant pressure force because of oil. Let us complete the resultant pressure force because of oil. So when I am talking of resultant pressure force because of oil, we will talk about density of oil and the area of the gate which is exposed to oil and the depth of the centroid of the same surface into G, rho G AHC. Now we will put all the values. Now I hope you remember one more thing. Sometimes the question is asked in kilonewtons. So what you will say? You will say, sir, density in kg per meter cube, area in meter square, centroidal depth in meter and acceleration due to gravity in meter per second square. This will be an answer in SI units. But if in the question kilonewton is asked, what we will do? We will divide this by 1000. Then you will get answer in kilonewton. So density upon 1000 is S. So either you use rho AGH, rho GAH, or you use SGAH. Rho GAH will give you Newton and SGAH will give you kilonewton. I want kilonewton because I know these values are large. So let us get answer in kilonewton. So if you are asking answer in kilonewton, that will be simply the specific gravity of oil into area of gate exposed to oil into the centroidal depth of the same surface into G. So this will become 0.8 into 3 meters square into 1.5 into 10. Let us take G as 10. बाकी अब आपको ध्यान रखना है, if it is not mentioned in the question, you cannot take G as 10. You have to take G as 9.81. जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना किया गया हो तब तक आप दूसरी वैल्यू नहीं लेंगे. You will take the same value. So let us find out the pressure force. 0.8 into 3 into 1.5 into 10. So I am getting an answer of 36 kilonewton. How much answer I am getting? I am getting an answer of 36 kilonewton. So this is the pressure force because of oil.
But the same thing can be found out in other manner also. So for this, I told you one concept. I told you a concept of pressure prism. I told you a concept of pressure prism. I told you that sometimes if you are not able to use the formula directly, you can find out the pressure force by some other method also. And what is the method? The volume of pressure prism is same as the resultant pressure force. What is the method? Volume of pressure prism is equal to resultant pressure force. Now for the gate, first of all, let us find out the pressure prism. What is the total height of the gate? 4 meters. What is the height of the oil? 3 meters. So oil is up to this much level, right? So this is 3 meters. Now these particular points, all these points, they are exposed to atmosphere. So gauge pressure on these points is 0. So at this particular level, gauge pressure is 0. But if I will go down in the oil, the pressure will increase, है ना? So how much will be the gauge pressure at bottom? I think the gauge pressure at the bottom will be 3 times rho oil G. भैया गेज प्रेशर कितना होता है? रो जी एच होता है ना? गेज प्रेशर कैसे आएगा यहाँ पे? So pressure at the top is 0. What is this depth? This depth is 3 meters. So you will say 0 plus 3 meters of oil. So rho G H. How much is the rho H? H is 3 meters. So from there I have got this answer, right? From there I have got this answer. Now check. If I will draw the pressure prism, I think on all these points the gauge pressure is 0 and on all the bottom points the gauge pressure is 3 rho G. So I think the pressure prism will look like this, which is a triangular wedge. Now for the triangular wedge, let us find out the area of cross section. So what is the area of cross section? Area of cross section is half into height of triangle, which is 3 meters, into base of triangle, which is 3 rho oil G. Just check for yourself what will be the answer. So I think 3 into 3 is 9. 9 into density of oil. So that is मतलब जो भी आंसर आएगा इसको अभी as it is रहने देते हैं. Now this is the area of cross section of the wedge. If you multiply area of cross section by perpendicular width, which is 1 meter, if I multiply this area of cross section by perpendicular width, I will get the volume of pressure prism. Now check for yourself how much value you are getting. So 3 into 3 is 9. 9 into 800 by 2, that is 9 into 4, 3600 into G, 10. So 36,000 or 36 kilonewton. So either you use the formula directly or you use pressure prism, you are going to get the correct answer. In fact, in many cases, the direct formula can fail, as in our question also, when you will talk of water, the direct formula will fail, but pressure prism will always give you the correct answer. Why? Why pressure prism will get the correct answer? Because what is resultant pressure force? So at a particular point whose area is dA, the pressure is P. So how much is the force? PdA. PdA is nothing but this cylindrical volume. So when you find out the total pressure force, it is the integral of PdA. It is the integral of this volume. So integral of volume means pressure prism. So resultant pressure force is always equal to the pressure prism, whatsoever may be the case. So I hope this one is clear. So all those people who will watch the video later on, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है. आप लोगों के पास मेरा नंबर रहता ही है, ग्रुप्स पे भी आप अटैच्ड हो, आप लोग डेफिनेटली कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है ना? नहीं तो अगर न्यू स्टूडेंट्स हैं तो वो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं. So the volume of pressure prism is always equal to resultant pressure force. So this thing we should remember, because in gate questions it can be a useful point. It can be a useful point. Now we found out the resultant pressure force, but I also want to find out the centroid of the resultant pressure force, center of pressure of the resultant pressure force.
Now check for yourself. So when we are talking of the resultant pressure force, we will consider only the submerged area. I think this is the submerged area and this is the oil surface. And I hope you remember the intersection of the solid surface and free surface of oil, that will be called as 1-1 axis. Now we need center of pressure for oil. So what do you say? You always say कि भैया this depth of center of pressure for oil, this will be equal to HC plus Ig upon AHC. This will be equal to HC plus Ig upon AHC. So obviously, how much was HC? It was 1.5. How much was the area of the submerged surface? It was 3 meters square. है ना? Now the question is, how much is Ig? So how do you find Ig? Ig means this is the centroid of the submerged surface. This is the centroidal axis parallel to 1-1. So BD cube by 12. How much is B? B is the width. That is 1. How much is the D? That is 3. So BD cube by 12. BD cube by 12. So I think what will happen? I think the depth of center of pressure will be 1.5, which is 3 by 2 only, plus 3 cube by 12 into 3 into 1.5. So how much is 1.5? 1.5 is 3 by 2. So I think this will become 6. This will become power 1, 3 cube by 3 square, that is power 1, and this will become 2. So I think the depth of center of pressure we are getting as 2 meters. कितना आ रहा है depth of center of pressure? 2 meters आ रहा है. अरे यार ये by chance I have given you good values है ना? 2 meters is easy to solve. So we are getting 2 meters. But now there were shortcuts also. Hi Sunil, how are you? Acha, Sunil, a lot of people are asking this question and every time my answer is same. So my answer is कि बेटा, without pressure measurement, no fluid system is complete. Whether you talk of hydraulic machines, whether you talk of assembly line in a manufacturing industry, कोई भी काम कर लो, pressure measurement के बिना कुछ नहीं हो सकता. Metrology ले लो. अब लास्ट 30 इयर्स का अगर आप हिस्ट्री देखते हो तो प्रेशर मेजरमेंट से कितना सारा क्वेश्चन आया है ना. अब लास्ट कुछ सालों में पंप वाज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस. 2019 नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, 2020 नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, मगर फिर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है. सो मेरा ये पर्सनल फीलिंग है कि ये जो मैनोमेट्री हट गया है ये उनसे गलती से हट गया है. समझ रहे हैं आप? मैनोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोथ फॉर सिविल एंड मैकेनिकल, और मेरे हिसाब से नहीं हटना चाहिए था. तो आपको उसका क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना चाहिए, उसका क्वेश्चन मिस आउट नहीं करना चाहिए. ठीक है ना. और वैसे भी छोटा टॉपिक है, अगर आपने एक दिन 3 घंटे लगा लिए, कोई वीडियोस वगैरह देख ली तो आपका फटाफट सॉल्व हो जाएगा. उसमें कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन करना है आपको. सो मैंने मैनोमीटर्स पे प्रेशर मेजरमेंट पे कई बार क्वेश्चंस कराए भी हुए हैं, वो फ्लक्चुएशन वगैरह वाले, उनको मिस आउट मत करो. मेरे ख्याल से बेवकूफी हो सकती है, अगर बाई चांस क्वेश्चन आ गया मैनोमेट्री पे तो दिक्कत खा जाएंगे. ठीक है. ओके, सो इन दिस क्वेश्चन, actually while finding out center of pressure, you could have taken some shortcuts also. There were 2 possible shortcuts. Finding out center of pressure, there are multiple possibilities. How there are multiple possibilities? You will ask me, sir, how there are multiple possibilities? Arey bhaiya, HC plus Ig upon AHC, this is nothing but I11 upon AHC. That is the moment of inertia of the solid surface with respect to 1-1 axis. Now check here, what is the 1-1 axis? 1-1 axis is nothing but it is the edge of submerged surface. 1-1 axis क्या है? इस submerged surface की edge है. तो जब आप submerged surface की edge की बात करेंगे, if you will talk of edge of a rectangular surface, I think for the edge, with respect to edge, the moment of inertia is nothing but BD cube by 3. I hope you remember this. If we talk of centroidal axis, moment of inertia is BD cube by 12. And if you talk of this side, moment of inertia is BD cube by 3. So you can save your number of steps. Now what is HPO? HPO is simply I11 upon AHC. That is BD
cube by 12 BD cube by 3 upon BD into HC, that is D by 2. Only thing is B is the width of submerged surface, D is the depth of submerged surface, है ना? Now what will happen? B is equal to 1 meter and this D, so this power will cancel out, this B and B will cancel out. So I think what we are getting is, we are getting, just a second guys, we are getting 2 into D by 3. We are getting 2 into D by 3. Now how much is D? D is 3 meters. So 2 into 3 by 3, that is 1 meter. So again you are getting the same answer, right? So please note, when 1 axis is the edge of the rectangular surface, you can directly use BD cube by 3. When 1 axis is the edge of semicircular surface, then what is the moment of inertia of semicircle about diameter? It is directly pi d raised to power 4 by 128. So you can solve your number of steps. Now the same thing can found out by other method also. How? Bhaiya, there is one more concept. There is one more concept. What is the concept? The concept is that the resultant pressure force passes through the centroid of the pressure prism. Resultant pressure force कहाँ से पास करता है? It passes through the centroid of the pressure prism. So basically, if this is the pressure prism on the surface, then the line of action of resultant pressure force will pass through the centroid of pressure prism. Centroid of pressure prism. So if I will see from here, what I will see? I will see that this is the surface. I will see the vertical line of the surface. On the surface, I will see the pressure prism, and actually I will see a triangle, a right angle triangle. Now pressure force acts on center of pressure of the solid surface, but it also passes through the centroid of the pressure prism. Now for a triangular pressure prism, if the height of the triangle is h, which is 3 meters in this case, what is the height of centroid from the bottom? I think height of centroid from the bottom is h by 3. जहां तक मुझे याद है, height of centroid from the bottom for a triangle is h by 3. So basically the center of pressure is also h by 3 from the bottom. Now how much is h? 3 meters. So 3 by 3 is 1 meter. So what will be the depth of center of pressure from the top? That will be 2 meter. Again you will get the same answer. So जहां भी triangular pressure prism मिल जाए, wherever you get triangular pressure prism, finding out center of pressure becomes quick, because if the pressure prism is triangular, from the top the depth of center of pressure will be 2h by 3. Yes or no? Please be fast. Please do let me know if I am correct or not. Please do let me know if I am correct or not. जल्दी से बता दीजिए. जल्दी से बता दीजिए. Thank you Navneet. Thank you. What is the pressure of water in the gateway? हाँ, so now we will calculate the water also. ठीक है? So Navneet, अगर कहीं कोई मेरे से mistake हो जाए, so please do let me know if I have made any mistake. And let us move ahead now. So one problem we have solved. We have found out the pressure force because of oil, 36 kilonewton, and the corresponding center of pressure. Now Muthu, let us check what is the force because of water also. Let us check what is the force because of water. Now comes the tricky part, you know. Now comes the tricky part. Now will come the more tricky part. Let us check what is the more tricky part. So first of all, rho g AHC, this formula is valid only when at the top surface of the fluid the gauge pressure is 0. But here it was given that above water, we have air, and the pressure transducer is measuring absolute pressure of 140 kilopascal. It is measuring absolute pressure of 140 kilopascal. And how much is the atmospheric pressure? 100 kilopascal. Now please note,
When on the right hand side you have calculated forces in terms of gauge pressure, then on the left hand side also you will calculate the force in terms of gauge pressure. ये चीज आपको याद रखनी है. I have taken the formula of rho g AHC now. So rho g AHC means at the top surface of the fluid the pressure is zero, gauge pressure is zero. So I consider this as zero pressure. So here also you will have to write the gauge pressure. How much is gauge pressure? It is 40 kilopascal. But again, on top surface of water, gauge pressure is not zero. So I cannot use the formula rho g AHC. So when you cannot use the formula rho g AHC, you will go back to pressure prism, because pressure prism is applicable everywhere. Now what is the total height of water? I think total height of water in the question I gave total height of water how much? Sorry, ये air लिख दिया था मैंने. Total height of water, let us take it as 6 meters. Okay, so when we consider the total height of water, it is 6 meters. And now I will find out the pressure prism on the gate. So I will show only the water side. I will show only the water side. So what we have water surface, and on the top surface of water the gauge pressure is 40 kilopascal. Now because of this I cannot use the formula rho g AHC. And here we have the hinge of the gate, and the total height of the gate is 4 meters. Now at this point how much will be the pressure? I think what is the pressure at top surface of water? 40 kilopascal. How much is this height? Total height of water is 6 meters. So this height is 2 meters. So I think this point, let us call this point as A. So pressure because of water at A. I think pressure because of water at A. So कैसे लिखेंगे मुथु? How will you write it? I think you will write it as 40 kilopascal plus 2 meters of water. है ना? P naught plus rho GH. 40 kilopascal plus 2 meters of water. 2 meters of water. Now this thing can be converted into kilopascal. So if you use rho GH, that will become pascal. But if you use SGH, that will become kilopascal. Now for water, how much is specific gravity? That is 1 only. So SG into H. So this will become 60 kilopascal. So what is the pressure? What is the pressure at A because of water? 60 kilopascal. Similarly, I will write down pressure at B, that is the bottom point, because of water. I think that will become top surface pressure is 40 kilopascal. How much is the height of water? 6 meters. So 40 kilopascal plus 6 meter of water. So you will say pressure because of water at B is equal to 40 kilopascal plus 6 meter of water, right? Now I think this will become 40 plus SGH. So 40 plus SGH. So please note G I have taken as 10, but जब तक आपको क्वेश्चन में मेंशन ना हो तब तक आप उसको 10 नहीं ले सकते. So I think this will become 100 kilopascal, right? How much this will become? 100 kilopascal. So what is the pressure at bottom? 100 kilopascal. Now let us complete the pressure prism on the gate. So on the gate, this is the top point, that is the hinge. This is the bottom point, that is B point. And what is the pressure at top surface? 40 kilopascal. What is the pressure at 60 kilopascal. What is the pressure at bottom surface? 100 kilopascal. And we all know that for incompressible fluid, pressure increases linearly with the distance. So I think this will become a trapezium. This will become a trapezium. But in actual, the 3D figure will look like this. The 3D figure will look like this. So Muthu, please do let me know if this is correct or not. All those people who are watching the video, please do let me know if this is correct or not. So guys, I think some people have joined a little late. So just for their information, so actually what I have done is, so up to GATE exam, every day I will run a topic of concept through question. One topic through concept through question. ठीक है? तो concept through question से एक topic करेंगे, उसका एक question solve करेंगे और उसके multiple angles देखेंगे. तो जैसे आज का question कुछ ऐसा है.
सो एक गेट है, गेट के राइट साइड पे ऑयल है मगर पूरी तरह टॉप तक नहीं है। तो जब टॉप तक नहीं है तो आपको ध्यान रखना होता है कि ये वाला पोर्शन कंसीडर नहीं करेंगे इन अवर कैलकुलेशंस। फिर लेफ्ट साइड में वाटर है मगर वाटर के ऊपर प्रेशराइज्ड एयर है, इसका मतलब रोजी AHC का फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लगा सकते। दूसरी बात, रोजी AHC तब लगाया जाता है जब गेज प्रेशर एट टॉप सरफेस ऑफ फ्लूइड 0 हो। तो अगर आप यहां पे गेज प्रेशर की टर्म्स में बात कर रहे हैं तो यहां भी गेज प्रेशर की टर्म्स में बात करेंगे। तो मल्टीपल एंगल्स थे। फिर हमने ये भी देखा कि रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स का जो फॉर्मूला है वो तो आंसर देता ही है मगर प्रेशर प्रिज्म भी आंसर देता है। HP इज इक्वल टू HC प्लस IG अपॉन AHC, उसको I11 अपॉन AHC से भी सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने ये भी दिखाया कि प्रेशर प्रिज्म का जो सेंट्रॉइड होता है उससे भी आप सेंटर ऑफ प्रेशर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग मल्टीपल एंगल्स कवर कर रहे हैं। हाय अनीश, हाउ आर यू बेटा? आई होप सही चल रहा है, तैयारी वारी सही चल रही है। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट वी डिस्कस, दीज आर द पॉइंट्स. Okay, so let's move ahead. Let us talk about where were we? We were talking of the pressure prism. Now, please note. So, can anyone tell me how do you find out the volume of a trapezoidal prism? How do you find out the volume of trapezoidal prism? I think first of all we will find out the area of this trapezium. So, what is the area of trapezium? Anyone, please be fast. What is the area of trapezium? What is the area of trapezium? Anyone, please be fast. It is the average of parallel sides multiplied by distance between parallel sides. What is the upper side? 60 kilopascal. What is the bottom side? 100 kilopascal. What is the perpendicular distance between them? 4 meter. So this will become 60 plus 100 by 2. 60 plus 100 by 2 into 4. Very good, Abra. Hi, Abra. How are you? Nice to see you. 80 into 4. So that becomes, how much is 80 into 4? I think it is 320 kilopascal, right? Not 320 kilopascal. Now it will become 320 kilopascal meter. 320 kilopascal meter. Now this is the area of trapezium, but you will multiply the area of trapezium by the perpendicular width, area of cross section into width. So then you will get the resultant pressure force. So 320 kilopascal meter, that is the area of trapezium into perpendicular width. So kilopascal meter square, that is kilonewton. So 320 kilonewton. So this is the force because of water. 320 kilonewton. I hope I am doing it correctly. Please do check. एक बार अपना कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लो, then we will move ahead. एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, then we will move ahead. Check the calculation and we will move ahead. Now, just like we use the concept that the resultant pressure force, obviously it acts on center of pressure of solid surface, but it also passes through the centroid of pressure prism, है ना? It also passes through the centroid of pressure prism, right? So we are going to use the same concept. We will use the same concept. Just a minute, guys. Just a minute. Okay, now I hope you remember that when we talk of the height of centroid of trapezium from the bottom, so let us suppose the centroid of this trapezium. I am talking of centroid of trapezium. I am not talking of centroid of pressure of solid surface. Centroid of trapezium. So if this side is A, this side is B, and this side is H, then the height of centroid of trapezium from the bottom, that is given as H by 3 into B plus 2A by B plus A. B plus 2A by B plus A. All of you, do you remember this? Do you remember this, right? This is the height of centroid of trapezium. So let me first of all find out this height. So what you will say, H is equal to 4 by 3. How much is B? 100 kilopascal. How much is A? 60. So 60 into 2 is 120 divided by B plus 60.
Okay, so I think this will become 4 by 3 into 220 by 160. So this will become 40. 0 and 0 will cancel out. 22 is 11 and this will become 2. So 11 by 6 meters. 11 by 6 meters. So height of centroid of trapezium from the bottom is 11 by 6 meters. Now you will ask me, sir, एक बार इसका figure का ढंग से imagine कर लें. So what I am trying to say is that this is your solid surface. This is the solid surface, right? Solid surface has a total height of 4 meter. At a depth of 2 meters, that is in the middle, you will have the centroid of solid surface. At some depth, you will have the center of pressure of solid surface. Now on this solid surface, there is a pressure prism. So at the top, pressure is 60 kilopascal. At the bottom, pressure is 100 kilopascal. Now this pressure prism will also have a centroid, which we are calling as CT. So actually the resultant pressure force, it acts like this. It passes through CT and acts on P. Now how much is this height? This height we have just now calculated 11 by 2 meters. How much? 6 meters. 11 by 6 meters. So guys, एक बार calculation जरूर check कर लेना कितना आ रहा है calculation, ठीक है? So if it is 11 by 3 meters from the bottom. Now if you talk of the depth of center of pressure from the top edge, so how much is 11 by 6? It is 1.83. Let us take it as 1.83. So if we will see the profile, if we will see from the side, this is the hinge of the gate. The gate is 4 meters in total. The centroid of the gate will be in the middle. This will be the center of pressure, which is 1.83 meters from the bottom. So what is the depth from the hinge joint? What is the depth from the hinge joint? So 4 minus 1.83, that is like 2.17 meter. But what is the total level of water? Total level of water is this. That is, it is even 2 meters above the hinge joint. So what is the depth of center of pressure from the water surface? That will be 4.17 meter. So in the question, depth of center of pressure was asked, and depth of center of pressure is always calculated from top surface of fluid until and unless it is not mentioned. So I think this thing we have calculated, right? Now our aim is to find out the minimum stopping force and to find out the minimum stopping force and to calculate the forces in the hinge joint. Now guys, this is the gate. On the right hand side of the gate, there was force because of oil, 36 kilonewton. And what was the depth? What was the depth from top surface of oil? So this was the top surface of oil, which was 3 meters. So obviously this is 1 meter, and depth from top surface of oil, this was 2 meters, right? So if you will find out the distance of the force from the hinge joint, that will be 3 meters. So force of oil from the hinge joint, that is 3 meters. And when you consider the depth from the hinge joint of force of water, so force of water is 320 kilonewton, and force of water acts at a distance of how much from the hinge joint? It is 2.17 meter. Why I am taking only 2.17 meter? Why I am not considering the depth from top surface of water? Because it will be more helpful for me in calculating the forces. मुझे जब forces calculate करना है, मुझे बाकी distance की जरूरत ही नहीं है, तो मैंने वो लिखा ही नहीं, ठीक है? अब क्वेश्चन ये आता है, मिनिमम स्टॉपिंग फोर्स क्या लगाएं? ऑब्वियसली आप देख सकते हो यार, दिस फोर्स विल क्रिएट सम मोमेंट एंड इट विल ट्राई टू रोटेट द फोर्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दिस फोर्स विल क्रिएट सम मोमेंट एंड इट विल ट्राई टू रोटेट द गेट इन क्लॉकवाइज सेंस.
So obviously the moment of this force is going to be quite high, है ना? So the gate will try to rotate in anti-clockwise sense. In which sense? Anti-clockwise sense. So if you want to stop the gate, you will apply a force over here. So you want to balance the moment. You want to balance the moment. Moment is equal to force into distance. More is the distance from the hinge joint, less is the force. So when you want the force to be minimum, the force is always exerted at the other end. I hope मैं सही कह रहा हूँ. I hope मैं सही कह रहा हूँ. सो अनीश ने आंसर भी दे दिया. आलोक, आभरा, मुथु, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज डू लेट मी नो इफ दिस इज करेक्ट और नॉट. मैं क्या कह रहा हूं, 320 किलो न्यूटन का एक मोमेंट होगा, 36 किलो न्यूटन का मोमेंट होगा. मोमेंट इज इम्बैलेंस्ड. सो बिकॉज ऑफ द मोमेंट द गेट विल ट्राई टू रोटेट. नाउ यू हैव टू बैलेंस द मोमेंट बाय अप्लाइंग फोर्स. So force into distance is moment. So more is the distance from the hinge joint, more will be the moment and lesser will be the force. So to have minimum stopping force, you should apply the force at the other end. ठीक है ना? So एक काम करते हैं, force को दूसरी end पे apply कर देते हैं. So this will be 4 meter. Now first of all, let us write down the moment of 320 kilonewton, which is anti-clockwise. So 320 into distance from the hinge joint, which is 2.17 meter. Now let us write down the moment because of 36 kilonewton, which is clockwise. So 36 into 3. And let us write down the moment because of stopping force, that is F into 4. When anti-clockwise moment and clockwise moment will balance out, the gate will stop. The gate will remain in equilibrium. So how much is the force? I think it is 320 into 2.17 minus 36 into 3 divided by force and 4, and obviously this answer will be in kilonewton. So when I consider when I solve this, 320 into 2.17 minus 36 into 3 divided by 4, I am getting an answer of 146.6 किलो न्यूटन. सो दिस इज द स्टॉपिंग फोर्स. वेरी गुड अनीश बेटा, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है. सो दिस इज द स्टॉपिंग फोर्स. नाउ बेस्ट पार्ट इज, सर आप एक चीज भूल गए. On the gate there will be reaction forces from the hinge joint also. So let us say hinge joint is applying a resultant force whose component is Fx and Fy. So while writing down the moment equation, you did not consider Fx and Fy. So I always tell you, in fact you guys tell me, you always tell me ki sir Fx is passing through the hinge joint, moment will be 0. Fy is passing through the hinge joint, moment will be 0. So when we are writing the moment equation, there is no need to consider Fx and Fy. And if they are asking you the stopping force, you only write the moment equation and you will get your answer. है ना? Now we will talk about the reaction of hinge joint also. So when we are talking of reaction of hinge joint, bhaiya, the gate is not only in rotational equilibrium, but it is in translational equilibrium also. So this direction we have 320 kilonewton, this direction we have 36 kilonewton, and we also have, which we just calculated, 146.6 kilonewton as the stopping force. But the hinge joint will also apply a reaction force. So sum of all forces along X must be equal to 0. So you will say 320 equal to Fx plus 36 plus 146.6 kilonewton. So Fx will come out equal to be equal to 320 minus 36 minus 140. So एक मिनट, ये ऐसे हो जाएगा, ए ऐसे हो जाएगा. आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक. So Fx has to be written on this side, right? Because I have taken the same directions. So Fx plus 320 is equal to 36 plus 146.6. So how much will be the Fx? Fx will be equal to 36 plus 146.6 minus 320. So 36
plus 146.6 minus 320. So I am getting minus 137.4 kilonewton. Obviously you will say, sir, this means minus sign means that the direction taken by you is wrong. The correct direction is this. This is the correct direction. And what is the magnitude? Magnitude is this much. This is the value of Fx. Now the gate is in equilibrium. So if the gate is in equilibrium, sum of all forces along y direction must also be equal. Now in this particular case, if the weight of the gate is given, then weight will be equal to Fy. समझ रहे हैं आप? ठीक है ना? So like this, you can find out Fx also, you can find out Fy also, but these are the components of reaction force by the hinge joint. So this will be the total reaction force, resultant reaction force. अब गाइस देखो, इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या मॉडिफिकेशन किया. इस क्वेश्चन में हमने पहले तो हमने ये देखा कि भैया the surface of the portion of the surface which is outside fluid, it must not be considered while calculation. Only that portion which is inside the fluid must be considered. The formulas that we use are used in the case when at the top surface of the fluid gauge pressure is 0. So rho g AHC, HC plus Ig upon AHC, I11 upon AHC, these formulas can be used only if at the top surface of fluid gauge pressure is 0. Then we also saw the same value comes out from pressure prism also. So volume of pressure prism is resultant pressure force, and centroid of pressure prism gives you the height of the center of pressure. Height and depth of center of pressure. We also saw that how we can use I11 upon AHC. And then we saw that bhaiya, if on the top surface of the fluid the gauge pressure is non-zero, then you only go by the concept of pressure prism. ठीक है ना? So ये हमारे different modifications थी क्वेश्चन में. तो हमने multiple modifications consider की. Now what is the additional thing to remember? So any question that comes from hydrostatic forces will be on the similar lines. Only possibility is that your gate might be inclined. So if there is a surface which is inclined, this will be the centroid of the surface. Okay. So I hope you remember. Sometimes I make a simple figure. So what I say, let us consider that this is top surface of water, and let us consider there is a solid body inside water which has an inclined surface. So we are talking of the inclined surface. So what you will do, you will extend the plane of inclined surface. This will become 1 axis, right? And this will be the centroid of inclined surface. This will be the center of pressure of inclined surface. If the depth of centroid is HC, the depth of center of pressure is HP, then the resultant pressure force will be equal to rho g AHC, which is the same formula. Okay? And depth of center of pressure, that will change a little, HC plus Ig upon AHC sine square theta. Okay? So vertical plane we did, and inclined plane, this is the formula. अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, otherwise the concept is over from my side. कल जो concept रहेगा, the concept will be buoyancy. And like this, every day we will cover one topic from questions. So up to compressible flow, I have already planned the videos. अगर कोई ऐसा दिन रहा जिस दिन I am not available, then for that day I will make the video first, I will record it, and the recorded video will come on stream. ठीक है? So कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, otherwise we will leave. So चेक कर लीजिए, एक बार क्वेश्चन से गो थ्रू कर लीजिए, otherwise we will leave out. This was the question for today. So I wanted you to find out, there was a wall. In the wall there was gate. On left side there was water inside a closed compartment. On the right hand side there was oil which was open to atmosphere. Height of oil was less than the gate. So here there is a chance of mistake. So we should remember which area to take, which center of pressure to take.
On the left hand side above water there is air, so there also there is a chance of mistake, because rho g AHC and HP is equal to HC plus IG upon AHC. These terms can be used only when the pressure at top surface of the fluid is 0. So here you use the concept of pressure prism. And secondly, on the left hand side the pressure of air was absolute pressure, but on the right hand side you did calculation with gauge pressure, so on the left hand side also you will do calculation with gauge pressure. तो ये आज का क्वेश्चन था, ठीक है. So this question has been done in the classes also. इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी क्लास में भी कराता हूं मैं, या होमवर्क के लिए भी देता हूं. बस ये प्रेशर ट्रांसड्यूसर वाला पार्ट मैंने ऐड कर दिया था, और क्लास में जो क्वेश्चन कराया है उसमें ऑयल का लेवल हिंज के लेवल तक रहता है. यहाँ पे मैंने ऑयल का लेवल थोड़ा कम कर दिया है ना. तो आबरा ये थोड़ा सा चेंज किया है बेटा मैंने क्वेश्चन को. तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं. कल ऐसे ही ब्यूएंसी का क्वेश्चन करेंगे. सून जैसे आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के पहले 2-3 चैप्टर रिवाइज कराए हैं, सून आई विल ब्रिंग आउट 1 hour वीडियो फॉर 1 चैप्टर. 1 hour और 1 hour 1.5 hour, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उसमें ना आपका टाइम वेस्ट होगा. तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स का ऐसा ही एक वीडियो होगा जिसमें पहले से ही ना स्लाइड्स में नोट्स लिख के रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है अदरवाइज टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा. फ्लूइड काइनेमेटिक्स का एक वीडियो आएगा, फ्लूइड डायनेमिक्स का वीडियो आएगा, बाउंड्री लेयर का वीडियो आएगा, मगर छोटा छोटा वीडियो, सो दैट यू कैन स्पेंड मोर टाइम ऑन अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो. मैन्युफैक्चरिंग भी है, थ्योरी ऑफ मशीन्स भी है, मैथ्स भी है ना, सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है. सो ठीक है, तो कोई डाउट है तो गाइस पूछ लो, अदरवाइज आई विल लीव. कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल लीव. आबरा, मैन्युफैक्चरिंग कहां तक हो गया बेटा? मैन्युफैक्चरिंग कहां हो गया? मैन्युफैक्चरिंग तो अब कंप्लीट हो गया होगा तेरा. मुझे लगता है तू कौन से सब्जेक्ट पे पहुंच गया है? थ्योरी ऑफ मशीन सॉम कंप्लीट करा कि नहीं किया? और अगर हो गया है तो फिर देख लेना, चाहे थोड़ा सा टाइम इंडस्ट्रियल पे भी लगा लो. रोज का अगर 1-2 घंटा लगा, तेरा तो वैसे शेड्यूल बहुत बिजी है, बट मेरे ख्याल से भी छुट्टियां आ गई होंगी है ना, तो अपना रिवीजन तो करते रहो. बट अगर 1-2 घंटा इंडस्ट्रियल पे निकाल लो तो यार इंडस्ट्रियल भी कवर अप हो जाएगा तेरे केस में. तो देख लेना, ट्राई कर लो. सो गाइज डू लेट मी नो, अदरवाइज वी विल लीव नाउ. ठीक है, फिर तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है, तो चलते हैं. कल मिलेंगे, ब्यूएंसी का एक मजेदार सा क्वेश्चन करेंगे, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स कवर अप करेंगे. ठीक है, चलो फिर, बाय बाय. थैंक यू सो मच.